So let's start the gospel according to Matthew. मत्ती से रचित सुसमाचार. मत्ती करके नाम का अर्थ है, मीनिंग है गिफ्ट ऑफ गॉड एंड इन ग्रीक कटा मताइयोन इवांगेलियोन. कटा मताइयोन इवांगेलियोन. हिंदी में तो मत्ती से रचित सुसमाचार. कितना अध्याय है? 28 अध्याय है. So first heading, introduction. The Gospel of Matthew stands as the first book in the New Testament canon, as one of the most influential writing in Christian scripture. So in a canonical way, or during the time of canonization, Matthew was added as the first book in the New Testament. So in our Bible, English Bible, or in our any other languages, we can see Matthew as the first canonical book of New Testament. But according to the dating, which one was the first one? Mark. That's why we took the gospel according to Mark as first one. It presents a comprehensive account of life, teaching, death and resurrection of Jesus Christ. So as it is here in the book of Mark, the gospel according to Matthew also has the content of life and ministry, death and resurrection of Jesus Christ. It emphasizes the identity or his identity as the Messiah and fulfillment of Old Testament prophecy. So Matthew presents Jesus Christ as the fulfillment of Old Testament prophecy. मत्ती से सुसमाचार में मत्ती ने यीशु मसीह को पुराने नियम का भविष्यवाणियों को पूरा हुआ यीशु मसीह का आने से करके ज्यादातर लिखा है. So मत्ती और मैथ्यू presents Jesus Christ as the fulfillment of Old Testament prophecy. पुराने नियम में बहुत जगह पर भविष्यवाणी हुआ था और भविष्यवाणी पूरा हुआ किसके आने से? किसके आने से? यीशु मसीह के आने से करके मत्ती बहुत जगह पर लिखा है. The gospel has played a central role in shaping Christian theology, ethics and ecclesiology. So मत्ती से सुसमाचार कलीसिया का सिद्धांत के बारे में समझाने के लिए और मसीह लोगों का सिद्धांत के बारे में समझाने के लिए बहुत 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 अच्छा से उपयोग हुआ, होते आ रहा है, आज भी है. So the gospel according to Matthew also has played a central role in Christian theology and ethics. Ethics means rules and regulations, how we should live. Then ecclesiology. Ecclesia means church. Ecclesiology means study about church. Under that first heading, authorship, lekak. First we are going to have a look into tradition. What tradition is speaking or what tradition says about authorship. लेखक के बारे में पुराना परंपरा में क्या बताया गया देखेंगे. परंपरागत रूप से या ट्रेडिशन says the gospel according to Matthew and it is written by Matthew he is also known as Levi. मत्ती का दूसरा नाम, the other name of Matthew, Levi. He was one of the 12 apostles of Jesus. According to the synoptic gospel, Matthew 9 verse 9, Mark chapter 2 verse 14, Luke chapter 5 verse 27 to 29. आपका बीच में से तीन लोग इस वचन को लेकर पढ़ना. Matthew was a tax collector before being called by Jesus and following him. यीशु मसीह का बुलाहट आने से पहले और यीशु मसीह का पीछे चलने से पहले मत्ती ने एक चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर था करके इन वचनों से हमको सबूत मिलता है. Evidence we can get from Matthew chapter 9 verse 9. Somebody read Matthew chapter 9 verse 9. वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले. वह उठकर उसके पीछे हो लिया. कौन सा पढ़ा मत्ती? मरकुस 2 का 14. पंकज. So these verses will give you enough evidence regarding the occupation that he was doing before he started following Jesus. यीशु मसीह का बुलाहट आने से पहले क्या कर रहा था सबूत है. पढ़िए मरकुस 2 का 14. जाते हुए उसने हलफाई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा. कहाँ बैठे हुए देखा? चौकी पर.
क्या करते हुए? सूंगी। सो टैक्स कलेक्टर। और उनका दूसरा नाम मरकुस में लिखा है, दूसरा नाम क्या है? लेवी। The early church fathers like Papias, Irenaeus and Irenaeus says that, Eusebius says that, and they says anonymously affirmed Matthew's authorship. So even in the traditions of church fathers or according to church fathers, they also said the gospel according to Matthew was written by Matthew, whose name is Levi, whose occupation was tax collection. Papias, as quoted by Eusebius, stated that Matthew composed the sayings in the Hebrew dialect and each one interpreted them as he was able. So there was a tradition, there was a view that they says that church father, who is that? Eusebius says that he wrote down everything in Hebrew dialect. इब्रानी भाषा में लिखा करके कलीसिया का एक पादरी या एक फादर बताता है। कौन? मत्ती ने इन बातों को पहले कौन सा भाषा में लिखा करके बोला? Hebrew. The testimony suggests that Matthew wrote a collection of Jesus saying logia in Hebrew or Aramaic. There was one more view says that maybe Matthew wrote down the entire gospel in Hebrew or Aramaic. समझ आया? Later formed the basis for the Greek gospel. उसके बाद इस सुसमाचार ग्रीक यूनानी भाषा में आया। समझ आया? तो पहला मत्ती ने हिब्रू या अरामिक में लिखा करके एक बात है ट्रेडिशन में। समझ आया? However, no Hebrew or Aramaic version of Matthew's gospel has survived. लेकिन इब्रानी भाषा या अरामिक भाषा में लिखे हुए मत्ती से सुसमाचार किसी को भी नहीं मिला। समझ आया? That's why we conclude by saying he might have wrote down it in Greek itself, because there was no evidence, arguments या views है Hebrew या अरामिक में लिखा करके। There are views which says that Matthew wrote down it in Hebrew or Aramaic, but no one has the evidence document in hand. That's why final word is he might have wrote down it on Greek language. इधर तक समझ आया? So लेखक कौन है? उसका दूसरा नाम? सबूत? Mark Zoka? Mark two was 14. What was his occupation? Then Jesus called him. Then we discussed about, or there was a small thought. There was a small small paragraph on this here, on this PDF. He wrote down it in Hebrew or Aramaic, but later we said that, or it says that there was no evidence. That's why we will fix it into Greek. Modern scholarly ideas or perspective says that modern scholarship generally question direct apostolic authorship, suggesting that the gospel was written by anonymous Jewish Christian scribe or teacher. So there is one more view says that it was not written by Matthew. The gospel according to Matthew was written by any Jewish teacher or scribe. यहूदी लोगों का कोई एक स्क्राइब, एक शास्त्री या क्या बोलते हैं अध्यापक इस सुसमाचार को लिखा होगा। One more idea or one more perspective that it was written by some Jewish teacher. Including the Gospel of Mark and hypothetical says source of Q. So they say that by using Mark as the first source and Q as the second source, some Jewish teacher wrote down the Gospel according to Matthew. समझे? कोई भी यहूदी अध्यापक मरकुस से सुसमाचार को इस्तेमाल करते हुए और अलग कुछ स्रोत को इस्तेमाल करते हुए इस सुसमाचार को लिखा करके भी एक सोच है या एक विवरण है इसके बारे में, एक व्याख्यान है, व्याख्या करता है लोग, इंटरप्रिटेशन है। The gospel anonymity does not diminish its authority. So whatever the arguments are there, और कितना भी अलग अलग बातें होगा, लेखक ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो नहीं करके, लेकिन सुसमाचार में बहुत अच्छा से very clearly this gospel conveys the purpose of the coming of Jesus and the life and ministry of Jesus Christ till resurrection,
एंड असेंशन। अलग अलग यूज होगा, मत्ती ने लिखा या नहीं, कोई अध्यापक ने लिखा करके होगा, हिब्रू या अरामिक में लिखा करके होगा। देयर माइट बी डिफरेंट व्यूज दैट इट वाज रिटन बाय मैथ्यू, लेवी, और इट वाज रिटन इन अदर लैंग्वेजेस, हिब्रू और अरामिक, व्हाटएवर इट इज, द कंटेंट एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस गॉस्पेल इज फुलफिल्ड। इधर तक समझ आया? डेट, the gospel according to Matthew is generally dated between 80 and 90 CE, common era। समझ आया? 80 to 90 CE का बीच में मत्ती से सुसमाचार को लिखा था। Some scholars also say that 60 to 70 CE, और कुछ पंडित लोग बताता है 60 to 70 CE का बीच में लिखा होगा, और some other scholar says that up to 100 CE। So, any one date you can fix. Several factors support a post 70 CE date, और हम देखेंगे मतलब 70 CE का बाद ही लिखा करके बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारा सबूत है वचन से ही। There are many evidences which speaks that it was written after 70 CE. Evidence number 1, Matthew chapter 22 का 7 and 24 का 1 to 2, there is an awareness about the destruction of Jerusalem temple। यरूशलेम का मंदिर टूट गया, तोड़ा गया करके समाचार इन वचनों में हमको मिलता है। अगर ऐसा है तो 70 CE का बाद में ही लिखा था। रीड 22 का 7। The king was angry and he sent his troops and destroyed those murderers and burnt their city। तब राजा का क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। 24 का 1 and 2। Jesus left the temple and was going away when his disciples came to point out to him the building of the temple, but he answered them, "You see all this, do you not? Truly I say to you, there will not be left here on one stone." So these evidences speak that the gospel according to Matthew written after 70 CE. Second, it addresses issues relevant to post-temple Jewish community, such as role of the law and the identity of the true people of God. So when you read the gospel according to Matthew, you can even identify this. There are some issues that happen in the community of Jewish community. Those things also there in the gospel according to Matthew। मत्ती से सुसमाचार पढ़ने के समय यहूदी लोगों के बीच में कुछ परेशानी बातें समस्या हुआ था, वो बात भी हमको क्या सबूत देता है? 70 CE का बाद ही लिखा होगा। थर्ड वन, it shows a developed ecclesiology suggesting a period when Christian community had become more organized। सिर्फ मत्ती से सुसमाचार में चर्च या एक्लीसिया करके शब्द को आप लोग दे सकता है सुसमाचार में, वो कहाँ है हम ढूंढेंगे। सो कलीसिया के बारे में भी मत्ती से सुसमाचार में हमको थोड़ा सा समाचार मिलता है। सो ऑल दिस एविडेंसेस सेज दैट इट वाज रिटन आफ्टर 70 CE। प्लेस ऑफ कंपोजिशन कहां से लिखा? सीरिया का अंत्योकिया से लिखा। The place of composition is Antioch in Syria, a major center of early Christianity and a city with significant Jewish population। ज्यादातर यहूदी लोगों का जनता था, पॉपुलेशन था। कहाँ? अंत्योक इन सीरिया का अंत्योका करके जगह से मत्ती से सुसमाचार लिखा था। क्लियर? And when you read the gospel according to Matthew, you can even see the combination of Jewish and Gentile concerns। यहूदी लोगों का यूनानी लोगों का समस्या का ऊपर बातचीत हुआ है मत्ती से सुसमाचार में, इसलिए हमको एक बात समझ आता है इसी सोचने के लिए। अगर शहर है तो फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, डू यू थिंक इन दिल्ली ओनली दिल्ली नेटिव पीपल्स आर लिविंग? दिल्ली में जब बच्चा पैदा होकर बड़ा हुआ, जन्म लेकर पैदा हुआ, वो लोग ही जीते हैं क्या? नो, इट इज ए मिक्स्ड कम्युनिटी। तो इन द सेम वे इधर भी मिक्स्ड कम्युनिटी था, मतलब यहूदी लोग भी था, यूनानी लोग भी था। कहाँ?
Antioch in Syria. So while Matthew wrote this gospel, he identified, he addressed both points or both sides and both issues belonging to Jewish people and Gentile people. इधर तक समझ आया? At the same time, Matthew's gospel also addresses Gentile believers. It is not only addressing Jewish believers, it is also addressing Gentile means यूनानी भाषा बोलने वाले लोग. For example, when we connected with Jewish community, he spoke issues regarding ritual purity, Sabbath, genealogy. वंशावली के बारे में बताया, सबत के बारे में बताया और शुद्धिकरण, पवित्रीकरण का कुछ बातें जो यहूदी धर्म का अंदर है उसके बारे में भी मत्ती ने बताया. So Matthew, while he wrote documented this gospel, he addressed Jewish community as well as he addressed Gentile community. Coming to Gentile community, you can see Rahab and Ruth, all these genealogies that is there in the gospel according to Matthew chapter 1. So it was a mixed community. समझ आया? Read Matthew chapter 28 verse 19. Go therefore and make disciples of the So nation. addressing the Jewish and Gentile community, he even included. It is not only for these two communities, it is for every nation. समझ आया? Purpose of writing. In many places like chapter 1 verse 22, Matthew says, जैसा पुराना नियम में नबी ने बोला था पूरा हुआ. As it was written in the Old Testament, it is fulfilled here. Read 1 verse 22. So fulfillment of scripture is one of the major theme in Matthew, or fulfillment of prophecy is one of the major theme in Matthew. Read 1 verse 22. All this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. So homework number 1, find out the word fulfill in the book of Matthew. In the gospel according to Matthew, मत्ती से सुसमाचार के अंदर फुलफिल करके जो शब्द है उसको ढूंढना है कितनी जगह पर लिखा है. ये ढूंढने का होमवर्क इसलिए मिल रहा है जब टाइम मिलेगा बैठकर पढ़ने के लिए, और कुछ नहीं. Whenever you get time, at least read just to find out, just to finish this homework. So the one of the main theme is, as it is written in the Old Testament or as it is prophesied by the prophet, पूरा हुआ करके बहुत जगह पर लिखा है. So यहूदी लोगों को समझाना था, तुम लोग जो पढ़ के बैठा है पुराना नियम का, वो कहाँ पूरा हुआ, को किसका आने से पूरा हुआ? So he is the Messiah करके स्थापित करना था. So Matthew want to state this, say this to the Jewish community, for whom you are waiting, he is here. That's why he said that prophecy is fulfilled. The kingdom of heaven, central theme. Kingdom of heaven. So whenever you see Jesus is speaking or preaching, one of the main topic was kingdom of heaven. Jesus as a teacher, chapter 5 to 7, Sermon on the Mount, you can see 5 to see. In many places you will find Jesus teaching the people, not only preaching, he is also teaching. So Matthew chapter 5 to 7, you can see Old Testament 10 commandments, updated version in Matthew chapter 5 to 7. मैंने updated version करके इसलिए बोला, वहाँ जो बातें बोला उससे ज़्यादा strict वाला बातें मैथी अध्याय 5, 6 और 7 में लिखा है. समझ आया? Discipleship and ethics, चेलेपन और नियम, थर्ड थीम है मत्ती में. कैसा हमें यीशु मसीह के चेला बनना है और क्या क्या नियम को पालन करना है, और तीसरा विषय है. फोर्थ, conflict with religious authorities. Wherever Jesus went and he spoke to the people, many Pharisees, Sadducees, religious Jewish fathers or Jewish priests came and they opposed Jesus by saying, who are you to speak? Who are you to forgive? Who are you to forgive? Who are you to come to the synagogue and speak? Who gave you the authority? So this was our fourth theme in the gospel according to Matthew. Then universal mission. That's how Matthew ends his gospel.
ends his writing. That's why I made you read Matthew chapter 28. Universal gospel means it is not only for these two community, it is for whole world. Till this point, how many of you did not understand? इधर तक कितने लोगों को समझ नहीं आया? समझ आया? Clear? Literary structure. Matthew chapter 1. Let's open our ESV Bible. Matthew chapter 1 to 4. That division we will see later. So we will go and see what are the important things here. Matthew's gospel is carefully structured, combining narrative and discourse in symmetrical pattern. Many scholars identify 5 major discourses paralleling the first 5 books of Moses. So मूसा से रचित पहला 5 किताब जो पुराने नियम में है, वो 5 किताब पर आधारित होते हुए 5 बातें मत्ती से सुसमाचार का अंदर है कर पंडित लोगों को समझ आया, वो बातें हमें अभी देखने वाला है. The scholar identified there are 5 major elements which is similar to first 5 books of Old Testament which was written by Moses, and the first one Sermon on the Mount chapter 5 to 7. Sermon on the Mount हिंदी पहाड़ी किस चीज को याद दिलाता है इस पढ़ने के समय? 10 commandments. The mission discourse chapter 10. The parable of the kingdom. That is chapter 13. The community discourse chapter 18. The eschatological discourse chapter 24 to. So how we can connect Sermon on the Mount relating to 10? Then the mission discourse. We can even connect it with the life and ministry of Abraham, Moses. है या नहीं? The parable of the kingdom. वाचा का संदूक नहीं. देश, the promised land. वहाँ जाने के लिए ही हमारा भी लक्ष्य है. Then the community discourse. लेवी व्यवस्था, Numbers, Deuteronomy, giving laws to the community. नियम दे रहा है पूरा समाज के लिए. The eschatological discourse, अंत में बताया गया है वाचा का देश जाने के लिए तैयारी ड्यूटरोनॉमी में. So you can connect these 5 points with first 5 books of Old Testament. The relationship with other gospel. First one, synoptic problem. Yesterday we studied what is meant by synoptic problem. Synoptic problem क्या है? Why it is looking similar and why it is different. Use of Mark. Approximately 90% of the information are extracted from the gospel according to Mark. But it is expanded and modified. जैसे ही कॉपी नहीं किया, उपयोग नहीं किया, उसको थोड़ा अच्छा से एक छोटी सी बातों को लेकर, उदाहरण द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मत्ती ने कितना बड़ा डिटेल्स लिखा. एंटायर चैप्टर में पूरा पुराना नियम के बारे में ढूंढ के लिखा होगा या लिखा. So he took the idea and he expanded it and he explained it. That's how we can say. समझ आया? Who? Matthew. The Q source and M material. Q source means collect other sources. समझ आया? Then historical context. While Matthew was writing his gospel, Matthew's gospel emerges from a Jewish milieu deeply affected by the destruction of the temple in 70 CE. This event forced Judaism to redefine itself around the synagogue and the Torah, while early Christians sought to understand their identity apart from the temple worship. So, the Jewish background of Matthew's gospel is, it was very different situation. Why? Because Jewish people lost their temple. That's how the situation were when Matthew was writing this gospel. मत्ती ने सुसमाचार लिखने के समय मंदिर को तोड़ा गया था. सो यहूदी लोगों को फिर एक बार उनका धर्म या उनका रीति रिवाज के बारे में सोचने का समय था.
This was the time when Jewish people started rethinking about their community, synagogue, mandir, temple. Why? It was destructed. इसको तोड़ा गया था, इसलिए फिर सोचना है ना, नया बनाना है तो वो समय में लिखा था। अगर वो लोग सिर्फ मंदिर के बारे में नहीं, मूसा से दिए हुए नियम के बारे में सोचना था। समझ आया? The Roman context. The gospel was written within the broader context of Roman Empire, where issues of authority, loyalty and persecution were pressing. So रोमी अधिकारी लोगों का सताव भी चल रहा था। So it was during the time of Roman persecution this gospel emerged, or Matthew wrote this gospel. So two background we studied. Then Christology in Matthew. What is meant by Christology? Study about Christ. What are the names you can find in Matthew's gospel related to Christ? Son of David, Son of God, Emmanuel, God is with us, Teacher and Lord, King and all these titles pointing to Jesus Christ. 16 verse 8. Somebody read 16 verse 8. Eighteen. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church. So, the gospel according to Matthew is the only gospel to use the term ecclesia, church. चर्च करके नाम या टाइटल ecclesia करके शब्द को सिर्फ एक ही सुसमाचार में उपयोग किया। वो कौन सा सुसमाचार है? सबूत 16 verse 18 and 18 verse 17. So ऊपर दिए हुए मेन थीम्स का एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है। द एथिक्स और द लॉ, द किंगडम ऑफ हेवन, द पैशन एंड रिसरेक्शन, theological significance, influence and reception. So before concluding, we will go and read chapter by chapter from ESV Bible. हिंदी आउटलाइन पढ़ी है किसी ने? यीशु की वंशवाली। अच्छे से पढ़ो, वचन के साथ आवाज उठाकर अच्छे से पढ़ो। चैप्टर फर्स्ट, यीशु की वंशवाली। पहले का 18 में है यीशु का जन्म, और दूसरे अध्याय में जनजाति जो अच्छे से पढ़ना। ज्योतिषियों का हिंदी पढ़ने के लिए भी मुश्किल है। और 13 में है मिस्र देश को जाना, और 19 में है मिस्र देश से लौटना, और 3 चैप्टर में है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और उसका 13 में इस प्रकार है यूहन्ना द्वारा यीशु का बपतिस्मा, और चौथे चैप्टर में है यीशु की परीक्षा, और चौथा का 12 में इस प्रकार है यीशु के सेवा कार्य का आरंभ, और 18 में है प्रथम चेलों का बुलाया जाना, और 23 में है यीशु का रोगियों को चंगा करना, और चैप्टर 5 में यीशु का पहाड़ी उपदेश, और चैप्टर 5 का थीम में धन्य वचन, और 13 में नमक और ज्योति, और 17 में व्यवस्था की शिक्षा, और 21 में क्रोध और हत्या, और 27 में व्यभिचार, 31 में तालाक, और 33 में शपथ, और 38 में प्रतिशोध, और 43 में शत्रुओं में से प्रेम। मैं नहीं ऐसा पढ़ने के लिए नहीं बोला, वहाँ आपका पहला पेपर में ही एक आउटलाइन लिखा है ना, रूपरेखा करके। So we will divide this gospel and we will check how can we divide this gospel into 9 different divisions. First one, chapter 1 and 2 introduction. I will send these notes in the WhatsApp group.
So you can note down while you are writing. Introduction, chapter 1 and 2. Preparation for ministry, chapter 3 and 4. The Sermon on the Mount, 5 to 7. Miracles and mission of Jesus, chapter 8 to 10. Opposition and parables, 11 to 13. Ministry expansion and revelation, 14 to 17. Teachings on community and forgiveness, Matthew chapter 18. Journey to Jerusalem and final teaching of Jesus Christ, chapter 19 to 25. Passion, death and great commission, chapter 26 to 28. So मत्ती से सुसमाचार अध्याय 1 से लेकर 28 तक पढ़ के देखा था. In a shortcut way, first part is introduction 1 to 3, then till end the life and ministry of Lord Jesus Christ. So you can divide it into two main parts. 1 to 3 introduction, then 4 to 28 the life and ministry of Lord Jesus Christ. It includes passion narrative, Sermon on the Mount, teaching, miracles, parables, everything. समझ आया? So is there any doubt that you have? So I will summarize with the application. So the gospel according to Matthew portrays or present Jesus as the fulfillment of Old Testament prophecy, and he says Jesus is the king of all the world, or Jesus is the Messiah for whom they were waiting. So audience were Jewish community, but we can say it was a mixed community, not only Jewish but also Gentiles. He wrote down it from Antioch in Syria. He is also asked one more name, that is Levi. He was a tax collector. Total 28 chapters, and it has 28 chapters, and he even took the help of Mark and other source, but he expanded it. That's why we have 28 chapters including genealogy. And he spoke about the issues of Gentile community, and he spoke about the issues of Jewish community. And it is very clear that it happened, he wrote down everything after the destruction of Jerusalem temple. समझ आया? Till this point. And the application was, even though in the midst of persecution, stand firm, do not leave your faith. That's why I told, after the persecution, after the temple destruction, even Romans were persecuting many Christians. So he wrote down everything in even the teachings of Jesus and everything, and he gave a message to the community, stand firm. समझ आया? So coming to your ESV Bible, you can see author, theme, purpose, key themes and outline and everything, and there is a section, the global message of Matthew for today. So yesterday I forgot to remind you. While you read that, you can identify the main issue that is happening here where we are living or at present, and how it is related with the historical evidence. मिला? Page number 1320. So I shared that outline in the group, class number 1. You can copy from there. Any doubt from the gospel according to Matthew, you can ask now. So ऐसा वाला सोच में जीने वाला यहूदी लोगों के सामने मत्ती ने यीशु मसीह को प्रकट किया. जो लोग ऐसा सोच में था मैसिया आएगा, महल में जन्म लेगा, he will be a king. In the midst of them or in front of them, Matthew presented Jesus as fulfillment of Old Testament prophecy. पुराने नियम का भविष्यवाणियों का पूरा हुआ किसकी आने से, ये बोलते हुए मत्ती ने यीशु मसीह के बारे में यहूदी लोगों को समझाया. हमने ओनली मेन पार्ट्स ही ले रहा हूँ इस सब्जेक्ट से या इस पीडीएफ से.
मतलब इतना से बातें अभी मन के अंदर फीड है Yes, sir. पक्का. सो राइट ए शॉर्ट नोट द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू करके लिया इतना बातें लिख सकता है. कहाँ से लिखा, क्यों लिखा, लिखने का उद्देश्य क्या था, और यीशु मसीह के बारे में क्या क्या बोला, कि कौन था सुनने वाला, ऑडियंस कौन था, विशेषता क्या है, जैसे एक्लेशिया करके नाम सिर्फ. सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर हियर. और So some scholars are saying that this Matthew is not writing this book. some scholars says that Matthew did not write, some other Jewish teachers wrote, but there is no evidence. There is no evidence. Any doubt? Chapter 1, the genealogy of Jesus Christ. Open your Bible. The genealogy of Jesus Christ, chapter 1, verse 1 to 17. Then 18 to 25, the birth of Jesus Christ. Chapter 2, the visit of wise man. 2 verse 1 to 14. The flight to Egypt. Why they had to flee to Egypt? Because of Herod. Because of Herod. Then chapter 2 verse 16 to 18. Herod kills the children. Chapter 2 verse 19 to 23. The return to Nazareth. Chapter 3 verse 1 to 17. John the Baptist prepares the way. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का कहानी. Then chapter 4, the temptation of Jesus. क्या है वहां का कहानी? 40 दिन का उपवास. उसके बाद chapter 4 verse 12 to 17. Jesus begins his ministry. यीशु मसीह सेवकाई. So when he heard that John had been arrested, यीशु मसीह ने गलील में गया. Chapter 4 verse 18 to 22. Jesus calls the first disciple. यीशु मसीह चेलों को बुला रहा है. Jesus ministered to a great crowd. बहुत बड़ा झुंड से यीशु मसीह के सेवकाई 23 से लेकर chapter 5. Sermon on the Mount, the Beatitudes, salt and light, Christ came to fulfill the law, anger, बहुत अलग अलग विषय के बारे में. Lust, oath, retaliation, love your enemies. Chapter 6, giving to the needy. Chapter 5, the Lord's Prayer. Not chapter 5, chapter 6, verse 5. 6 verse 16, fasting. 19, lay up treasures in heaven. Then do not be anxious, judging others. Chapter 7, ask and it will be given. The golden rule. So I am not going to read till chapter 28. So these are the outline you can see in the gospel according to Matthew. Is there any other thing or any other doubt from this gospel? If you have, you can ask now.